Hey guys, Assalamu alaikum, Rayyan here. In this video, I'll be going over Module 3 and I'll show what labs are required and आप लोग को क्या क्या चीज़ें complete करने हैं to earn this completion badge. Firstly, ये required labs है, these three, and then ये quiz है. Then we have this required lab and this quiz. So I'll quickly go over my first lab, multiple VPC network, and I'll start this. So यहाँ पे module start हो चुका है. What we are going to do in this lab is we are going to create VPC networks. What is a VPC? It is called virtual private cloud. होता क्या है कि जो क्लाउड होता है आपका उसमें एक ग्लोबल स्पेस होती है, समझो कि इट इज़ द होल यूनिवर्स. उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पर आपका क्लाउड का डेटा स्टोर होता है, और वो प्राइवेट इसलिए होते हैं कि उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकते आप उसका डेटा. सो आपको करना क्या है कि यू नीड टू क्रिएट सम VPCs, प्राइवेट कंटेनर्स, फिर उसके बाद प्राइवेट क्लाउड, सॉरी, एंड उसके बाद यू नीड टू रन दीज वर्चुअल मशीन्स उसके अंदर, एंड उसके अंदर वर्चुअल मशीन्स को कम्युनिकेट करके दिखाना है. सो लेट्स गेट ओवर इट. So now I am in my Google Cloud Console. The first step here is to create a custom mode VPC using firewall rules. So I'll create my first VPC, virtual private cloud. तो and उसका name management net create करना है. So I'll create it. As you can see, दो VPCs already बने हुए हैं. I'll create a VPC network. यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करना होगा हमारे प्राइवेट क्लाउड का, यहाँ पे मैनेजमेंट नेट. उसके बाद ये सब पैरामीटर्स है. वेट, ये VPC के अंदर एक सबनेट क्रिएशन मोड के लिए कस्टम बोल रहा है, तो लेट्स डू दैट. सबनेट मोड कस्टम है. सबनेट का नेम क्या है? सबनेट इज कॉल्ड सबनेटवर्क. सो सबनेटवर्क इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेटवर्क जहाँ पर योर VPCs विल बी डिप्लॉयड. तो रीजन US East 1 बोल रहा है. US East 1 start, and this is IPv4 range. Alright, then click done. ठीक है, I'll click done, and यहाँ पर एक सब नेटवर्क बन गया, और फिर I'll just click create. ये VPC क्रिएट हो रहा है. आफ्टर आई क्रिएट दिस मैं जाके चेक करूँगा, चेक माई प्रोग्रेस करूँगा. Successfully created. Auto mode is custom. Internal IP address is not given. So right, let me check my progress. Make sure कि your credentials are exact. US East. कभी कभी if you don't use this, आगे के जो tasks है उसमें problem आएगी. Alright. Create the private network. ओके, नाउ अभी हम जो किया है वो हम यूजिंग द कंसोल किया है. नाउ हम लोग द सेम थिंग यूजिंग एक कमांड लाइन करेंगे. तो लेट मी कॉपी दिस. इसमें हो रहा क्या बोले तो गूगल क्लाउड कंप्यूट. ये गूगल क्लाउड इज़ द कीवर्ड. इसके इफ़ यू टाइप इन गूगल क्लाउड, देन गूगल क्लाउड के अंदर जो भी टूल्स है उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं आप कमांड्स. जैसा कि गूगल क्लाउड के अंदर मैं कंप्यूट इंजन यूज़ कर रहा हूँ, तो गूगल क्लाउड कंप्यूट. उसके बाद कंप्यूट इंजन का मैं नेटवर्क एट्रीब्यूट चेंज करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं नेटवर्क्स में जा रहा हूँ. उसके बाद
आई एम क्रिएटिंग ए नेटवर्क, तो इसीलिए दीज कमांड्स आते हैं. सो इफ़ यू वांट टू चेक क्या क्या कमांड्स अवेलेबल है गूगल, समझो कि मेरे को गूगल क्लाउड के अंदर क्या क्या टूल्स अवेलेबल चेक करना है, तो मैं गूगल क्लाउड कंसोल में जाऊँगा, जी क्लाउड मारूंगा, उसके बाद आई विल प्रेस tab and I'll press tab again. तो उसके बाद it will display me a set of all commands that are available, जैसा कि compute बताएगा and all different tools that are that can be used. तो मैं I'll copy this, I'll activate my terminal. सी ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गया है, जिसमें जी क्लाउड कंप्यूट नेटवर्क्स क्रिएट प्राइवेट सबनेट मोड इक्वल टू कस्टम. अभी हम लोग जो कस्टम इस पे किए थे, कस्टम मोड सबनेट चेक करे थे, दैट इज द एग्जैक्ट सेम टास्क जो कि कमांड लाइन से कर रहे हैं. तो आई विल कॉपी ऑल ऑफ दिस. एज यू कैन सी यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली. नाउ आई विल गो एंड चेक प्रोग्रेस. So basically what a firewall rules are कि ये it will prevent any malicious attacks and on your network. So होता क्या है कि it will set some rules to your network. So I'll just do that. So for management net, अभी जो VPC बनाया हम लोग उसके firewall rules set करेंगे. तो these are the rules. हमको जो चेक करना है, मेक श्योर कि आप लोग exactly ये कॉपी कर रहे हैं जो हो रहा, अदरवाइज ये लैब बहुत मुश्किल से कंप्लीट होगा. So I'll go there, firewall. I'll close this panel. I'll close this. So create firewall rule है, मैं इसको क्लिक करूँगा. The rule name is this. इसका नेटवर्क ये है, तो मैनेजमेंट नेट टारगेट ऑल इंस्टेंसेस. टारगेट ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क. यहाँ पर नेटवर्क इज मैनेजमेंट नेट, ठीक है. फिर IPv4 सोर्स फिल्टर IPv4 रेंजेस. उसके बाद check TCP अदर, यहाँ पे ICMP, फिर टाइप 22 कॉमा. I'll copy this and paste it here. अभी ये फायरवॉल क्रिएट होगा, फायरवॉल रूल क्रिएट होगा एंड see this firewall rule is being created, successfully created. अभी मुझे चेक करनी है प्रोग्रेस, so I'll go check. अभी जो हमने किया, हम एग्जैक्टली वो इससे करेंगे क्लाउड शेल से. सो आई विल जस्ट स्पीड रन दिस. अभी हम लोग चेक कर रहे हैं व्हाट फायरवॉल रूल्स लिस्ट इज, जो भी रूल्स अप्लाई हुए वो चेक कर रहे हैं, उसको सॉर्ट कर रहे हैं. देखो गाइस, आप लोग को ये मेमोराइज करना ज़रूरी है, बट ऑल्सो यू नीड टू फाइंड पैटर्न्स अमॉन्ग ऑल ऑफ दीज कोड्स, राइट. तो अभी हम लोग को वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं. दिस इज़ लाइक आपका जो VPC बना हुआ है वो एक कंटेनर लिख के वैसा है वो क्लाउड में, जो कि बहुत सिक्योर है. कंटेनर इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, बट इट इज़ ए प्राइवेट क्लाउड. तो उसके अंदर आपको कंप्यूटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, विच इज़ द वर्चुअल मशीन्स.
सो यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने के लिए बोल रहा है. लेट अस क्रिएट दैट. क्रिएट a virtual machine instance. सो गाइस हम लोग कंप्यूटर इंजन के अंदर VM इंस्टेंसेस में आ गए. अब हम क्रिएट, यहाँ पे 2 ऑलरेडी क्रिएटेड है. अभी हम क्रिएट इंस्टेंस करेंगे. फिर US East 1, US East 1 C. ऑलराइट, यहाँ पे E2 सेट करना है हमें. उसके बाद यहाँ पे कस्टम में E2 मीडियम, व्हाट आर द कोर्स दैट आर रिक्वायर्ड, E2 माइक्रो. एंड देन ओके, नेटवर्किंग में जाके ये 2 प्रॉपर्टी सेट करने हैं. आई डू दैट क्विकली. E2 micro and then advanced options, networking, network interfaces. What are network interfaces? Network interfaces allow the computers to in the network to communicate. A network interface is a software representation of a network inside this. So ये होता क्या है कि it will basically control how the computer virtual machines inside interact with each other. So I'll add a network interface. So after this is done, I'll go and check my progress. अभी हमने एक वर्चुअल मशीन इंस्टेंस क्रिएट किया विद ए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे हमने नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया. एंड नेटवर्क इंटरफेसेस ये डिफाइन करते हैं कि हाउ द कंप्यूटर्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ओके, असेसमेंट कंप्लीट. फिर हम एग्जैक्टली सेम टास्क करेंगे यूजिंग कमांड लाइन. सो आई डू दिस अगेन. ओके, सो ये कमांड रन हो चुका है. देखो गाइज, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, द थिंग इज कि ये कमांड लाइन आपको एग्जैक्टली कॉपी करना है. असेसमेंट कंप्लीट. अभी हमको क्या करना है, दिस इज टेलिंग मी सॉर्ट, बट वी नो दैट हमको जो ओके. सो टास्क 3 एक्सप्लोर कनेक्टिविटी बिटवीन वी. अभी हम लोग को एक्सप्लोर करना है कनेक्टिविटी. अब जो जितने भी वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस बने हुए हैं, क्या वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं. तो दिस पिंग कमांड इज यूज टू, यहाँ पे पिंग कमांड के साथ एक आर्गुमेंट डालना पड़ेगा विच इज़ वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस. आई स्किप ओवर दिस टास्क बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर. एंड देयर इज दिस टेस्ट दैट यू कैन कंसिडर गिविंग. क्रिएट ए वर्चुअल मशीन विद मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस. अभी हमने एक नेटवर्क इंटरफेस के साथ वर्चुअल मशीन क्रिएट किया. अभी हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है विद मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस. तो हमें ये कंप्लीट करना पड़ेगा. सो विल क्विकली डू दैट. सो वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है विद मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस. सो चलो करते हैं. कैसा करना है वर्चुअल मशीन? क्रिएट इंस्टेंस. इससे एक वर्चुअल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. CE2 and then not this standard E4. Advanced options, networking. एडवांस ऑप्शंस के अंदर नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क इंटरफेसेस में ऐड नेटवर्क इंटरफेस मैनेजमेंट नेट. यू मस्ट देखो गाइस, समटाइम्स ये इश्यूज ऐसा आ रहे हैं कि यू मस्ट सेलेक्ट अ सब नेटवर्क एंड यहाँ पर मुझे सब नेटवर्क ही नहीं दिखा रहा इन स्टफ. सो आई विल जस्ट कैंसिल दिस. So I'll wait, I'll close for this instance, I'll wait.
I'll refresh this. Then I'll create my instance. Okay, before writing the name US Central 4, US East 1, US East 1C. Advanced option, networking. देखो guys, अब यहाँ पे मैनेजमेंट आ गया. So यहाँ पर sometimes इशू आ रहा है. So add another interface. My network IPs are overlapping. I'll delete this. Okay, I'll have to click done पहले यहाँ पर. And then management net में I'll have to click done. And then I'll have to click another. Default name private net. So private net. And then I have to click done. So yep, अभी हमने 3 network interfaces add कर दिया. अभी मैं create कर दूंगा. But first I'll have to rename this because I did not do that. So I'll go here, VM appliance, Control C, Control V, Control V, create. Virtual machine created. अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा और फिर I'll check my progress. So in this lab I ran into some issues, but yep, I was able to successfully debug, and now congratulations, I finished this lab. So I will end this lab. Submit. Shit.